A very good morning to all. Today deliver your class 10F, the water resources. Water resource, utilization of water, but only a small proportion of its accounts of fresh water that can be put to use. So do you know the fresh water that can be put in your use? Fresh water is mainly obtained from surface runoff, groundwater, and glacial ice. So it's the continuously being the renewed and recharged through the hydrological cycle. Water, some facts and figures also discussed. Now today your topic, water scarcity and the need for water conservation and management. Water scarcity. What is the meaning of the water scarcity? Means the non-availability of water. Some region, suppose some region like a lowland area and high altitudinal region area, hilly region area, but some region like a barren land arid region area. So availability of water. So we can see generally source of water in the high altitude region area, the mountainous region area, hilly region area, and lowland region area on the bank of river side. Available water available. Why? Due to natural relief and climatic conditions available. Now, other hand is the arid region area, या desert region area. A scarcity of water. Why? Due to the nature of land, climatic conditions, a scanty of rainfall are the facts to not the proper available the surface and groundwater. It is an outcome of the large and the growing population and consequent the water demands unequal access. So utilization, water is the natural resources. जब हम उस सोर्स का यूटिलाइज करते हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पस, द डोमेस्टिक पर्पस, तो एक्सेस द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर generally the low area to densely populated region area. Densely populated region area is more use of water. But the moment we speak the water shortage, why water shortage? तो कारण क्या है? तो कारण यह है कि रीजन के आधार पर देखते हैं.
चाहे वो रीजन हो ड्रॉट प्रोन एरिया, नेचुरल कैलेमिटीज रीजन, ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्राई लैंड एरिया, अब जहां पर हॉट टेम्परेचर है, एंड वन रीजन द फ्लडेड रीजन एरिया. We compare the two region area. One, the access availability of the water, and one region is not availability of water. So due to the natural calamities, nature of land and climatic conditions, but we know water, where is then water scarcity? कहाँ पर है? The region, tell me. The availability of water resources varies over the space and time, mainly due to the variation of, I have already discussed, mainly due to variation है seasonal and annual precipitation, but water scarcity is in most cases is caused by, कहता है कि ये जरूर ठीक है कि एक सीजनल वेरिएशन के कारण और एनुअल प्रिसिपिटेशन के कारण, जैसे सपोज इंडिया की जब बात करते हैं, द वेस्टर्न घाट रीजन एरिया, केरला कर्नाटक रीजन एरिया, तमिलनाडु रीजन, अंडमान एंड निकोबार रीजन एरिया, इक्वेटोरियल रीजन एरिया, एंड नॉर्थ ईस्ट द हिमालय रीजन एरिया, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गारो खासी जैंतिया एंड खासी रीजन एरिया is maximum receive the rainfall, maximum receive, but east to west from Arunachal Pradesh to run Gulf of Kutch, so slowly decrease and less receive the rainfall, and last western part of the Aravalli region area is very little rainfall. So problem के, but the human being, तो वह जल ही जीवन है, चाहे वो प्लांट के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, या ह्यूमन बीइंग के लिए हो. वाटर स्कार्सिटी, शॉर्टेज वाटर के, तो एक तो नेचुरल फिनोमिना के लेके चलते हैं, एक और दूसरा फैक्टर्स है द मैन, द ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल. मैन मेड की बात करो या नेचुरली बात करो, नेचुरली तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर लेवल decrease due to the high temperature. So the climatical factors, less rainfall, seasonal and annual precipitation, but some region the easily available water, but also the scarcity of water. So why? So due to the exploitation, excessive use and unequal usage of the water among the different social groups. Social groups, चाहे वो हिंदू की बात करो, मुस्लिम्स की बात करो, सिख की बात करो, ईसाई की बात करो, जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न मार्जिन की बात करते हैं, अरब कंट्री की बात करते हैं, तो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, फिजिकल वेरिएशन के कारण है. तो वहां पर वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो पीपुल है, उनको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाटर. Whether one drop water is the more
useful, where they are not available, the easily stop talking, easily available. But some region area, the excess availability of water, like in the low lying land area, Gangetic region area, northern plain region, Ganga, Brahmaputra, Indus, and its tributary. So easily available water, easily available. But people कहता है ना कि जहां एक्सेस वाटर है, जहां एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज है, वहां लोग उसका मिसयूज करते हैं. जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द लिमिट है, तो लोग लिमिट है. आज हमारी सपोज करो कि तुम्हारी बात करते कि 100 द वाटर स्टोर करके रखे हैं, but only the four and the five members that consume day by day water. वन द लिमिटेड वाटर है, एक्सेस वाटर यूज करते हैं. अगर वही 100 लीटर्स वाटर को 10% यूज करेंगे, तो नेचुरली जो है वाटर जो है आपका है, नेचुरली वाटर जो है क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा. एक्सेस है तो वी पीपल जो है कहते हैं कि वो देखोगे पिक्चर में देख रहे हो, चाहे वो देखो कि वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक. ठीक है, कोलकाता फ्लडेड एरिया है, कश्मीर किसी अर्थक्वेक एरिया है, या वेस्टर्न पर राजस्थान का एरिया देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द फ्लैग मार्क्स द स्वदेशी एक्सपर्ट्स, द वाटर स्ट्रेस अकर्स, water available is between इतना to इतना. तो but hydrological cycle, water life cycle, the continuous circulation of water, the three spheres, चाहे वो spheres हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फीयर, थ्रू इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये सिलसिला लाइफ साइकिल है. बट यू नो द फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर. कहता है कि वही अभी हम बताए कि 1000 लीटर वाटर है जिसका हम लोग कंजम्स करते हैं. और कहते हैं कि यू नो द लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर, not only for the drinking purpose, but all the human activities is also the products the more food. To facilitate the higher food grain production, water resources are being the over-exploited to expand the irrigated areas. Dry season agriculture may have seen the many television advertisement, and most the farmers have their own well and the tube well in their farms of the irrigation to increase their products. But have you ever wondered what this could result in? That is the falling of the groundwater. वाटर का लेवल कम गया है. आप गया में भी देखते हो कि बहुत ज्यादा पिछले 2-3 साल पहले की एपी कोनली है या आशा सिंह एरिया की बात करते हैं, वाटर लेवल कम हो गया. तो ये इसलिए नहीं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, द क्लाइमेटिकल कंडीशंस
क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। तो अब द ग्राउंड वाटर लेवल एडवर्सली अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द फूड स्कार्सिटी ऑफ द पीपल, अकाल जिसको ड्रॉट कहते हैं। जो इरिगेशन, इरिगेशन है, इरिगेशन सिंचाई का साधन होना चाहिए। अगर सिंचाई की साधन प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर नहीं है सिंचाई के साधन, तो नेचुरली है आपका द फूड प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो जाता है। तो अब ये तो एक जनरल कंसेप्ट है कि कंजम्पशन हमको करना है, तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ वाटर कंजम्पशन कम होगा। बट द वाटर इज द नेचुरल रिसोर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, बट वाटर इज एसेंशियल है। अब देखोगे कि इन द राजस्थान के एरिया की बात करते हैं, वहाँ का देखो कि वाटर जो है काफ़ी कम है, महिलाएं जो है मटका में पानी टुडे टुडे इन द डेजर्ट रीजन एरिया द सीन दैट टाइप ऑफ activities. So now the post-independence, the India witnessed intensive the industrialization and urbanization. So creating the vast opportunity for us today. कहता है कि large industrial houses are the common place as the industrial कट करना industrial houses are the industrial houses are the opportunities for today. So, industrial units of many. Now, the post-independence that the witness intensive, ठीक है, तो कहता है कि MNS multinational corporations increase the number of the industries had made the matter worse by the extending the presence on the existing freshwater. Industries, apart from the being heavy users of water, also require the power to run them, much of this energy. So in India, poor connection बता रहा, in India, hydro electricity power today, तो वाटर इज रिसोर्स सोर्स है, जब उसका हम लोग विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स करता है, तो टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, तो 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट नॉट इंडिया। मोर ओवर the multiplying urban center with the large and the dense population, urban lifestyle have not only added to the water and energy requirement, but have further made the problems. So far we have the force quantity aspects of water scarcity. Consider another situation where the water is sufficient available to meet to needs the population. अब हम वो सिचुएशन पर देखेंगे, डिपेंड करेंगे। स्कार्सिटी है तो इसका वाटर स्कार्सिटी है, हम लोग स्टिल सम एरिया स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर. Actually, there have been the growing need to needs of people
much of it the many may be polluted and domestic and industrial wastage. वाटर है मतलब वो वाटर जो आपका पोल्यूटेड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, देर सिखा इंडिया का कोई ऐसा है जो पोल्यूटेड वाटर है जिस वाटर का हम लोग न डोमेस्टिक पर्पस में यूज कर सकते न इंडस्ट्रियल पर्पस में? गंगा वाटर। न गंगा तो फ्रेश हो गया, गंगा तो यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपका पोल्यूटेड है। यमुना, रिवर यमुना का यस। तो आप कहते हैं क्या है? तो पोल्यूटेड बाय द किसके द्वारा हो रहा है? तो डोमेस्टिक and the industrial, the wastage, chemicals, pesticides and fertilizers used in the agriculture, the making it the hazard the for the human। ये कारण है कि हम अब जैसे पूरे गया का वेस्टेज मटेरियल जो है वो कहाँ हम लोग रिलीज करते हैं? वो थ्रू मेन होल रिवर। तो डालते हैं रिवर फल्गु में। तो नेचुरली है कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा? मेंटेन रहेगा क्वालिटी? नहीं। इंडियाज रिवर्स स्पेशली देखो द स्मॉल ओन हैव द ऑल द इन तो इनटू टॉक्सिक स्टेज एंड इवन the big ones like the Ganga and Yamuna are from the being the pure. From the population growth, agriculture, modernized urbanization and industrialization is and the growing by the day by day. So entire lifestyle is the status. तो ये धीरे धीरे जो नेचुरल जो प्योर फ्रेशनेस वाटर का है जो हिमालय से, गंगोत्री से, ग्लेशियर से या अलकनंदा हो या सियाचिन ग्लेशियर, वो धीरे 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 चूंकि जहां पर देखोगे कि जो सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एरिया है, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, दोनों एरिया का अगर स्टडी करोगे तो देखोगे जहां डेंसली जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां की वाटर की क्वालिटी अरे वाटर की क्वालिटी कम है, पॉपुलेटेड है, पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड है वाटर की क्वालिटी। बट where the less the small population, कारण क्या है कि जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां वाटर का उतना ही यूटिलाइज करते हैं और उतना ही उसका एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं और उसको डैमेज भी करते हैं वाटर को। We may have already realized that the need for the hour of the conserve and manage our water resources to safeguard ourselves from the health hazards to ensure the food scarcity। ये आपको पता है कि अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गया का ही बता रहा हूं, आप देखोगे गया का दो रीजन ले लेते हैं, एक मानपुर का रीजन ले लेते हैं, एक डेल्हा का कुजापी रीजन एरिया ले लेते हैं। कुजापी डेल्हा का कुजापी जो देख रहे हो वहां जो सब्जी प्रोडक्ट हो रहा है और वो मानपुर के एरिया में जो सब्जी है, दोनों के वेज सब्जी में आपको क्या डिफरेंसेस मिलेगा? कारण क्या है कि कुजापी डेल्हा एरिया में जितने भी अगर इरिगेट होता है उस वेजिटेबल्स को पटाया जाता है, वो सारा वेस्टेज वाटर जो है नाली के पानी जो है गंदगी वाला पानी से, उससे तो क्या है प्लांट को तो मिली है मगर उस फ्रूट्स का उस वेजिटेबल्स में का ग्रोथ जो हो रहा है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, वो फ्रेशनेस वो क्वालिटी नहीं है। देखो कि एक दो उस बहुत जल्दी वो क्या होता है
डिफॉर्म कर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, स्मेल करेगा। चाहे वहां के गोभी देखोगे, बैगन, जो भी सब वेजिटेबल है। तो वाटर, फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर इरिगेट करोगे और वही पोल्यूटेड वाटर या डर्टी वाटर जिसको कहते हैं, गंदगी वाला पानी, जो नाली वाला पानी, जो पूरे में वो पानी का हम लोग यूज करेंगे। तो कारण क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया फॉर्म कर रहे हैं जो आपके हानिकारक है। आप ही देखो ना, बरसात के रेनी सीजन में अगर आप पानी का यूज करते हो तो बहुत सारे डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। वही बॉइल्ड वाटर पियो जिसमें सारे बैक्टीरिया, आपके जर्म्स खत्म हो जाते हैं, उस पानी को हम लोग यूज करते हैं। तो वो कहने का मतलब कि वो वाटर पर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ वाटर यूज फॉर कॉमर्स, डोमेस्टिक पर्पज, चाहे कुकिंग हो, बाथिंग हो, ड्रिंकिंग की बात नहीं कर, बट कॉमर्शियल पर्पज, फॉर इरिगेशन पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। सो इट इज द मोर कंसर्न, मोर serious problem to conserve and manage the purity of our natural resources. Though it continuously over livelihood and the productive activity, and also the prevent the degradation of our natural ecosystem. So our exploitation and mismanagement over the water resources will improve, improvise the resources and the cause the ecological crisis, may have the perform the impact on life. So just the measures, some measures, अब आपको सब measures है, क्या क्या है हमको इसका यूटिलाइज करना है। मेजर्स की बात करते हैं। So some questions regarding the need water scarcity. So give the fact about the fresh water on the earth's surface. How much part of the world is covered with water? Very easily है, the 2/3 है। Write down industrialization and urbanization are the main causes of water scarcity in India. Why? Explain it. Water is, what is the water scarcity? And mention the main causes. Main cause बताओ। Water scarcity occurs when the water availability is not enough to match the demands of the for water. It is mainly caused due to the variation in the seasonal and annual precipitation, but most cases it is क्या है, exploitation है, excessive use of the unequal access the water among the different the social group. So that is the reason caused and by the water scarcity. Industrialization and urbanization creating the vast opportunity as well as depletion and pollution of the natural resources. So number one, the increasing the number of the industries. Industries, apart from being heavy, the usage the water also require the power to run the machines. Much of energy comes from the hydroelectricity power. Second, the housing societies and colonies in the city have their own the groundwater pumping device to meet the own the water needs. So there are some regions
How have the intensive industrialization, urbanization posed the great presence of the so fresh water is in India. How growing population can be cause the water scarcity? How? Tell me. How the growing population can cause the water scarcity? Water scarcity may be an outcome in the large part, large and growing population and constitute the water demands and the unequal access. Large population means the more water product, more food to facilitate higher food grain production. Water resources being the over exploitation and expands irrigated area and the dry season agricultures. The increasing the number of the industries had the matter, the rose, the extracting. Water scarcity may be outcome for the large, the growing demands, the population. Now, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं. Now, the discuss about the hydrological hydro, hydrological cycle, the continuous circulation of water in the three spheres through the evaporation, condensation, and the precipitation. कहते you know the multi-purpose river valley projects and integrated water resources management. The 2 points है multi-purpose river valley projects and integrated the water resources. क्या है? Multi-purpose river valley projects are the large-scale hydropower, hydro projects. The utilization of water with the help of the techniques, often including the dams of water, चाहे वो रिक्रिएशन हो, canals हो, irrigation water से water. So we know the multi-purpose river project is the pilgrim of the temple. Multi-purpose river project is the modern temple of India. Pandit Jawaharlal Nehru has said the multi-purpose river valley project is the temple of India. But the एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर आज से क्योंकि टाइम अभी है दो. एडवांटेज क्या है? द मेन सोर्स ऑफ पावर थ्रू द जनरेशन एंड इरिगेशन. सेकेंड एडवांटेज द conserving the soil to control the flood control, inland navigation, fish breeding and recreational activities. Navigation. नेविगेशन है, रिक्रिएशन है. डिसएडवांटेज. अब डिसएडवांटेज क्या है? ये तो मल्टीपर्पज का ये बताएंगे हम. डिसएडवांटेज क्या है? द फ्रैगमेंट्स द रिवर्स, एक्सेसिव sedimentation of the bottom, displacement the local people, affects the habits of the aquatic life, calamites the interstate. So today discuss